हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉमर्स। आज के वीडियो के लिए हमारे पास एक क्वेश्चन है विच इज फ्रॉम अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न टेक्निक ऑफ कैपिटल बजटिंग। द क्वेश्चन सेज एबीसी प्राइवेट लिमिटेड इज कंसीडरिंग परचेज ऑफ अ मशीन. Two options are available, which is machine X and Y. Cost of both the machines is rupees 1 lakh each, and both of the machine have an expected life of 5 years. Net profit before tax and after depreciation for both the machines are given here in the question. Based on the above information, we need to suggest to the company which of the machine should be purchased. Tax rate applicable is 30% and firm follows straight line method depreciation. क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इस तरह का एक टेबल बनाना है. टेबल हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज एक्स एंड वाई, क्योंकि ये दो मशीन्स आर अंडर कंसिडरेशन. दोनों ही केसेस में फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है एज इट इज हम यहाँ पर लिख लेंगे. उसके बाद विल राइट टैक्स एट 30% बिकॉज क्वेश्चन में हमें गिवन है टैक्सेशन एप्लीकेबल इज 30%. और उसके बाद फॉर बोथ द मशीन्स वी विल कैलकुलेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. हमें यहाँ पर सिंपली कैलकुलेट करना है टैक्स का अमाउंट फॉर बोथ द मशीन्स एंड फॉर ऑल 5 years. सो पहले साल में मशीन एक्स का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 15,000 रुपए. सो 30% के हिसाब से उस पर टैक्स बनता है 4500 रुपए. सिमिलरली फर्स्ट ईयर के लिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स है इन केस ऑफ मशीन वाई 18,000 रुपीज एंड उस पर 30% टैक्स बनता है which is 5,400. Similarly, we need to calculate for all the years and for both the machines. टैक्स का अमाउंट कैलकुलेट करने के बाद वी नीड टू फाइंड आउट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. सो मशीन एक्स के केस में फर्स्ट ईयर प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 15,000, उस पर टैक्स 4,500, so profit after tax will be 10,500. Similarly, machine Y के केस में for the first year profit before tax 18,000, tax as per 30% 5,400 and profit after tax is 12,600. Similarly, we can calculate for all 5 years for both the machines. And once you are done with calculation of profit after tax for both the machines, आपको simply क्या करना है, profit after tax वाले कॉलम का total कर लेना है for both the machines. This is your total profit after depreciation and tax for machine X and machine Y. So the formula for average rate of return is average profit after depreciation and taxes dividing it with average investment into 100. So first of all, we need to calculate average profit after depreciation and taxes. Total हम calculate कर चुके हैं in the table. Total profit after tax and depreciation as per the table for machine X is 70,700. We need to divide the same by life of the asset और वो हमें question में given है 5 साल. So we can simply calculate using this formula and doing this simple calculation average profit after depreciation and taxes for machine X as 14,140. अब हमें calculate करना है average investment for machine X. Average investment we can calculate by using this formula which is cost plus scrap value dividing it with 2. So cost हमें क्वेश्चन में गिवन है for machine X is 90,000. Scrap value नहीं है मशीन की, so that we can take as 0. So now we have 90,000 and we need to divide it with 2 to find out average investment. So average investment for machine X निकल कर आती है 45,000 rupees. अब हम मशीन X के लिए एवरेज प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस भी कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि है 14,140 एंड एवरेज इन्वेस्टमेंट जो कि है 45,000 भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं. नाउ वी कैन कैलकुलेट ARR फॉर मशीन X यूजिंग दिस फॉर्मूला एंड पुटिंग द वैल्यूज इन द फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट मशीन X के लिए ARR है 31.42%. अब कैलकुलेट करते हैं एवरेज प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस फॉर मशीन Y. टोटल प्रॉफिट जो हमारे पास निकल के आया है आफ्टर टैक्सेस एंड डेप्रिसिएशन फ्रॉम द टेबल
in case of machine Y is 71,400 and we need to divide it with life of the asset जो कि हमें given है 5 साल. So 71,400 dividing it with 5, we get average profit after depreciation and taxes as 14,280 for machine Y. मशीन वाई के केस में भी एवरेज इन्वेस्टमेंट सेम रहेगा बिकॉज उसकी भी वैल्यू 90,000 ही है एंड द मशीन हैज नो स्क्रैप वैल्यू सो वी हैव 90,000 डिवाइडिंग इट विद 2 एंड एवरेज इन्वेस्टमेंट इन केस ऑफ मशीन वाई इज ऑल्सो 45,000 rupees. And using the same formula we can calculate ARR for machine Y also. फॉर्मूला हमारे पास है एवरेज प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं एज 14,280 डिवाइडिंग इट विद एवरेज इन्वेस्टमेंट जो हमारे पास है 45,000 into 100 we get average rate of return for machine Y as 31.73%. So here we can clearly see कि machine Y के केस में ARR is higher than that of machine X. So we can suggest to the company that the company should be purchasing machine Y. So that was all for today. I hope you liked today's video. If you did, please like, share and comment. Do subscribe to the channel. Stay tuned in for the next video that will be posted 7 PM tomorrow. Till then, keep learning, keep growing. Have a nice day.